हमने डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन एंड हाउ दे फंक्शन, हमने उसके बारे में बड़ी डिटेल के अंदर बात की थी इन द फिजियोलॉजी पोर्शन. And believe me, most of this is going to be repetition of the older concepts. There's nothing new in here. ठीक है. तो यहाँ पे this is just an overview of how the places, the different segments of the nephron at which the different diuretics are actually working. तो आपको पता हो कि कौन सी diuretic कहाँ पे उसका एक्शन है. तो mannitol, you can see it is an osmotic diuretic. पहली बात, ठीक है. mannitol is an osmotic diuretic. Can any of you tell me a natural substance in the body which also acts as an osmotic diuretic, but only in pathological conditions, only when it is in high amounts in the renal tubules? Can any of you guess that substance? So, yes, doctor, that is glucose. ठीक है. तो the condition in which you should be getting large amounts of glucose in your renal tubule, that is diabetes mellitus. इसीलिए diabetes mellitus के patient को they get polyuria. This is the reason. This is one of the reasons that they get polyuria, because glucose invites water and that leads to diuresis. And once the patient diuresis, he feels thirsty and he drinks it again. He drinks a lot of water again. तो ये उसका चलता रहता है polyuria और polydipsia. तो it is acting in quite a large segment of nephron. PCT में भी इसका काफी role है, and in the descending loop of Fenley is permeable to water. And since this part is impermeable to water, the ascending limb इसलिए यहाँ पे ऐसा act नहीं कर रहा. DCT is also impermeable to water, इसलिए यहाँ पे भी इसका ज्यादा कोई एक्शन नहीं है. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट acetazolamide. uh this these are actually carbonic anhydrase inhibitors. ठीक है. एंड कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स का जो ज्यादा फंक्शन है, it is in the PCT. Hence, the effect of acetazolamide is on the PCT. Loop diuretics actually inhibit the sodium potassium 2 chloride channels, which are present in the thick ascending limb. Hence, they act on the thick ascending limb. Thiazide diuretics actually act and inhibit the sodium chloride transporter in the DCT. Hence, they act on the DCT. And lastly, potassium sparing diuretics, which include aldosterone receptor blockers and sodium channel blockers. They act on the they act on the collecting duct. तो ये वो सारे regions हैं जहाँ पे these different hormones act. कुछ और कुछ drugs की भी यहाँ पे, खैर हम we've discussed this before, but जैसे अब आपको पता होना चाहिए कि ADH analogs, which are desmopressin, ठीक है, they also act on the collecting, they act on the collecting duct. ठीक है. So this is just an overview of how and where the different diuretics they put their action. Now let's go through these one by one. So starting off with mannitol. Mannitol is a very important diuretic. तो how does it act? अभी मैंने आपको बताया कि it is an osmotic diuretic. But the other important thing, इसकी खास बात यह है कि it pulls all of the fluid from the extracellular space, from the interstitial space into the circulatory system. ये इसकी खास बात है. तो let me show you कि ये करती कैसे है ये mannitol. So let's just assume कि this is a blood vessel. This is a blood vessel. ठीक है. And we just injected the patient with some good amount of mannitol. So I'm gonna use green color for the mannitol. तो mannitol आ गई. And as I said, that mannitol attracts water. तो mannitol blood के अंदर, तो it's gonna extract all of the water from the interstitial spaces into the intravascular space. ठीक है. तो as stated over here, there is fluid shift from interstitium into intravascular space.
ठीक है, तो but what this does is this is going to increase the actual circulatory volume, ठीक है, इनिशियली। बाद में तो डायरेसिस हो जाएगा ना, बाद में तो डायरेसिस हो जाएगा, बट इनिशियली इट्स गोना इंक्रीज द सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। Hence, this is the reason. Hence, mannitol is contraindicated in pulmonary edema. Pulmonary edema के patient के अंदर it is contraindicated because if once इसमें pulmonary edema is could be due to increased hydrostatic pressure, heart failure के अंदर हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर अगर आप इंक्रीज कर दें सर्कुलेटरी वॉल्यूम, दैट विल इंक्रीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर and that will increase the edema in the lung. So it will worsen the pulmonary edema or it can actually cause pulmonary edema. ठीक है, तो इवन दो मैनिटोल आपके सामने आता है कि मैनिटोल है, इट इज अ डायरेटिक, ये देंगे पेशाब आएगा बंदे को और उसका डायरेक्ट उसका एडीमा ठीक हो जाएगा, बट नॉट इज नॉट द केस हियर, इट विल वर्सन द एडीमा। ठीक है, हेंस इसमें लिखा हुआ है जस्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एनुरिया। एनुरिया इज अ कंडीशन में देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन, total absence of urination and heart failure, तो it can cause pulmonary edema। फिर तो ये और उसकी और एडवर्स में इट कैन कॉज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों करेगी? बिकॉज अल्टीमेटली इट्स कैन कॉज डायरेसिस, स्ट्रीम डायरेसिस, एंड इट कैन कॉज हाइपो और हाइपरनेट्रीमिया। ये हाइपो भी करवाता है और हाइपर भी करवाता है। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस कि ये एक टाइम पे दोनों कैसे करवा सकते हैं, व्हाट लाइक। तो वो बड़ी सिंपल सी है, इट इज जस्ट ड्यू टू द फ्लूइड शिफ्ट। इनिशियली मैंने कहा कि इट्स गोना शिफ्ट द फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियम इनटू द सर्कुलेटरी वॉल्यूम। तो इससे क्या होगा? द ब्लड है आपका, द ब्लड विल बिकम, what will happen to the tonicity of blood? It will become dilute, it will become hypoosmolar, ठीक है, and hence the hyponatremia. But later on when diuresis occurs, the body will lose extreme amounts of water. That will then lead to hypernatremia because all of the water would be extracted from here, and hence the concentration of the nutrients, it will increase in the blood. तो उससे क्या होगा? उससे hypernatremia हो जाएगा। ठीक है, तो these were the adverse effect। अब इसके uses भी आपको पता हो। One, the uses जो आपको the examiners they like to ask are elevated intracranial pressure, और ये आपको elevated intracranial pressure and intraocular pressure, what's going to be the presentation, you should be knowing about the presentation की presentation कैसे होगी। Remember, intraocular pressure, this will this is especially acute, in acute cases. This is going to occur in acute congestive glaucoma. Okay, how is the patient going to present? The patient will present with the sudden onset, high intensity pain in the eyes, one thing. Secondly, there is going to be extreme congestion, or what you call as hyperemia, in the conjunctiva, the pink part of the eye. So this is how the patient is going to present in the raised intraocular pressure. Acute congestive glaucoma patient comes in, give mannitol right away. This is the treatment. And elevated intracranial pressure can occur in different conditions, but mostly जो मैंने अपनी real life में what I've experienced in cases, there are cerebral injuries. Cerebral injuries, infarctions, cerebral infarctions, you see, intracranial hemorrhage, that again due to cerebral injuries. So these are the different conditions which increase, and also some infection of the intracerebral area of the brain, you see,
एनकेफेलाइटिस हो जाए किसी को, या फिर एंसेफेलाइटिस के अलावा meningitis हो जाए, तो दे ऑल ऑफ दीज कंडीशन विल रेज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू लोअर डाउन द इंट्राक्रैनियल प्रेशर वी यूज मैनेटोल। okay, we use mannitol. So, and lastly, another important use is drug overdose. You see, mannitol, as we said, it increases diuresis. ठीक है, तो it also helps excrete the drugs through the renal pathway. ठीक है, so this was all you need to know about mannitol. The examiners, again, I'm going to highlight the high yield thing, pulmonary edema, and how does it cause it, the mechanism I just explained. This is high yield, and the use intracranial and intraocular pressure. These are the high yield things about mannitol. Now moving ahead, carbonic anhydrase inhibitors, acetazolamide. तो इसको यहाँ पे रीड करने से पहले first let's just read about this. Let us just revise the normal physiology that was going on in the proximal convoluted tubule, कि ये यहाँ पे actual में हो क्या रहा था. तो let me draw it. Just a minute. ठीक है. These are the three compartments. This is the tubular lumen. एक second. This is the tubular lumen. This is the renal tubular cell, and this is the blood. ठीक है, तो मैं इनको इनके कलर्स भी दे देता हूँ. Let me just paint them. This goes here and goes here. Like this. ऐसे. ठीक है. And lastly, the blood compartment. Actually, I like using colors because it's the colors usually act as memory hooks. तो मुझे वैसे भी I enjoy using colors while teaching. So it's also good for remembering important stuff and becomes interesting to teach. तो हाँ, तो पीसीटी में जिन लोगों ने गौर से लेक्चर लिया था पीसीटी का, रिमेंबर दैट पीसीटी के अंदर a lot of things were going on. इम्पोर्टेंटली यहाँ पे जो एक हो रहा था, दो पंप्स जो है ना मेनली यहाँ पे जो काम कर रहे थे. तो वन ऑफ दम वाज द पंप्स वाज हियर. यहाँ पे एक पंप काम कर रहा था, एक पंप यहाँ पे काम कर रहा था, और ये काम क्या कर रहे थे, ये this was pumping sodium out, this was pumping potassium in, and similarly this was pumping sodium out, and this was pumping hydrogen here into the renal tubule. And यहाँ पे bicarbonate आती थी HCO3, ये मिलते थे, and together they used to form H2CO3. H2CO3 was then broken down into H2O plus CO2 thanks to carbonic anhydrase. Let me choose a color for that. Carbonic anhydrase. फिर उसके बाद क्या होता था, this all of this was then reabsorbed in the renal tubular cell, CO2 plus H2O. Again ये मिल जाते थे under the influence of the same enzyme H2CO3, and then again it broke down into bicarbonate, which was again reabsorbed
ठीक है, and H plus which went here ultimately. ठीक है, so this is what was going on in the in the proximal convoluted tubule under normal circumstances. तो आप देख सकते हैं ultimately we were excreting H plus and we were absorbing bicarbonate HCO3. ठीक है, so we were actually making the urine more acidic and we were making the blood more alkaline. So if I give carbonic anhydrase inhibitor here, तो क्या होगा? Let's assume कि I stopped this enzyme. So that will stop this function. That will stop this function, which will stop this function, which will stop this function, and which will stop this function. तो क्या होगा? There won't be any H plus secretion and there would not be any bicarbonate reabsorption. ठीक है, तो उससे क्या होगा? The urine will become more alkaline instead. Let me choose another color. The urine will become more alkaline, whereas the blood will become more acidic. So there will be acidosis. Okay, there will be acidosis. This would be metabolic acidosis. Okay, acidosis due to change in the bicarbonate level is metabolic acidosis. Acidosis due to change in the carbon dioxide is respiratory. ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर. तो this is what carbonic anhydrase inhibitors are doing. ठीक है, तो ये this is how they are acting. अब देखें, they are making the urine alkaline. ठीक है, अब I'm gonna change these headings and you just observe what happens. Change. और and one more thing, जहाँ पे सोडियम जाता है, remember automatically H2O उसको follow करता है. ठीक है, wherever the ions go, especially sodium, H2O follows. So I'm gonna change the headings here now. तो ये तो आपने उसका फंक्शन देख लिया. Same process is also going on at another place in the body, and that is the eye. That is the eye, and hence carbonic anhydrase inhibitors are also an anti-glaucomatous drug. They are also used in the treatment of glaucoma, but how? वो ऐसे होता है, basically this compartment is now gonna be your, this compartment will now be the blood. This compartment here, this will be your ciliary body. Ciliary body is actually responsible for producing, this will be ciliary body, for producing aqueous humor, and this will be your, the intraocular space, the intraocular space. तो और वहां पर भी थैंक्स टू कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये इंट्राओकुलर स्पेस में एक्सक्रीशन हो रही होती है, किसकी? एक्वस ह्यूमर की. तो यू नो दैट इन ग्लाइकोमा देयर इज इंक्रीज्ड intraocular pressure. So what we can do is that in order to treat glaucoma, you can do two things. Either you increase the release, the excretion of the aqueous humor, or you decrease the production. So carbonic anhydrase, they actually decrease the production. Carbonic anhydrase inhibitor, यहाँ पे भी they will act the same, exactly same mechanism that will inhibit sodium excretion into IOS and H2O and bicarbonate. So all of these substances which are making up your aqueous humor, their excretion is now inhibited from the ciliary body. So hence these are used in the treatment of the glaucoma, and ये वो mechanism है जिससे यूज होते हैं. फिर again now I'm going to change the headings again. They are also used, this is now your intracranial cavity. Intracranial cavity. This is now, and this is again, this is going to be the blood. Blood, and this will be your blood brain barrier. So again, आपको पता है कि there is production of CSF
CSF is continuously being circulated in the intracranial cavity. So in conditions where there is increased intracranial pressure, वहाँ पर भी हम carbonic anhydrase inhibitors use कर सकते हैं because of the same mechanism again. तो ये आप देखें, तीन जगहों पे सेम ही मैकेनिज्म, सेम ही कहानी है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का कितना फायदा है, तीन जगहों पे हमने यूज कर लिया। तो काफी इसके काफी अच्छे यूज हैं। फिर एज आई सेड इनिशियली कि सिंस दे कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, carbonic anhydrase inhibitors can be used to treat alkalosis. ठीक है, especially which type of alkalosis? Respiratory alkalosis. And respiratory alkalosis की जो आपकी फर्स्ट में उसने एग्जांपल दिया है, that is mountain sickness. Mountain sickness. Mountain sickness बोला क्यों होती है? You see, when you go up into the mountains, you see these are the mountains. See, and let me draw some ice here. तो ये सी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर क्या होता है, द ऑक्सीजन कंटेंट इज एक्चुअली लो. So the body, in order to compensate the low O2 levels, the person will do hyperventilation. Okay. But in result of this compensation, by doing hyperventilation, the body loses great amounts of carbon dioxide. और आपको पता है the acid base balance of the body, it all is just there's just a seesaw, a balance between HCO3, bicarbonate, and CO2. So I just brought down the levels of CO2, actually the acid of your body, and that is what led to alkalosis. So in this patient, and one more thing, in लोगों के अंदर there is also increased intracranial pressure. Intracranial pressure भी बढ़ जाता है. क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हैं why in the patient of acute mountain sickness intracranial pressure क्यों बढ़ जाता है? Does anyone of you know that? ऐसा क्यों होता है? Well, one of the theories is that there is intracranial vasodilation. ठीक है, edema भी है, yes, edema भी है, edema is also a cause. तो यहाँ पे आपने दोनों दोनों पैथोलॉजीज का एक ही ड्रग से ट्रीटमेंट कर लिया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स. ठीक है, तो ये भी उनका एक यूज. तो आपने देखा, आपने कितने सारे यूजेस देख लिया आपने. फिर एक और भाई बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, दैट इज कॉल्ड आयन ट्रैपिंग. Ion trapping. This is a very interesting phenomena, and I will explain this on my whiteboard. What is ion trapping? You see, कोई भी substance है, any substance, either it is, and especially the drugs, either the drugs are acidic in nature or they are base. ठीक है, first thing हमने I'm gonna draw write four principles here. So the first principle is that all drugs, they're either acids or they're bases. First thing. Second thing is that all drugs are absorbed in uncharged form, or in other words, you can say unionized form. ठीक है, and vice versa. All drugs are not absorbed in ionized form. तीन principles हो गए. Last two principles. Acidic drugs are more uncharged
in acidic environment and vice versa. And basic drugs are more uncharged in basic environment. तो ये हमने तीन चार बातें कर ली. We said that all drugs are acids or bases. We said that all drugs are absorbed. अब absorb पे थोड़ी सी बात करते हैं. What do we mean by absorbed? Absorb से मुराद the ability to cross membrane. ठीक है, membrane. तो ये बातें होगी. Now if I ask you, what if I place an acidic drug in a more basic environment? Will it be absorbed or not? If we place an acidic drug in a basic environment, will it be absorbed or not? Well, Dr. Kurtolan is saying it will be absorbed. So if I place, let's just consider this example. I said I've got an acidic drug and I'm going to place this in a basic environment. मैंने अभी आपसे कहा कि acidic drugs are more uncharged in acidic environment and vice versa. मतलब acidic drugs are less uncharged or more charged or more ionized in basic environment. So if I place the acidic drug in a basic environment, this drug will become more ionized. It'll become more ionized. And as stated earlier, all drugs are not absorbed in ionized form. So ionized form drug, it wouldn't be able to be absorbed. So it will get trapped. Okay. So Dr. Kurzlan, let's test you in another example. Now I'm going to give a real-time example. Let's assume this is the stomach. Okay, this is the stomach, and it starts your intestine. And I'm gonna give a drug to a patient, two drugs actually, drug A and drug B. Drug A is actually drug A is an acid, and drug B is a base. Now you tell me, we've got two parts here. One is stomach and the other is intestine. Now, just to remind you, stomach has an acidic pH. There's a low pH, and intestine has a higher pH. It's an alkaline pH. So what do you think, where would drug A be absorbed the most? Drug A की absorption कहाँ पर होगी सबसे ज़्यादा? Will it be the stomach or the intestine? The Dr. Kurtulan says it's going to be the stomach. अच्छा, drug A आ गई. No, Dr. Kurtulan says it's going to be intestine. So, as I said, drug A is an acid. ठीक है? And for example, and I said that the pH of intestine, it is basic pH. And my drug is an acid. Let's just assume this is my drug. और मैंने अभी आपसे कहा कि an acidic drug is more unionized in an acidic environment. और मैंने यह भी कहा कि an acidic drug is more ionized in a basic environment.
नाउ दिस ड्रग विल बिकम मोर आयोनाइज्ड, इस पे चार्ज आ जाएगा। तो और मैंने शुरू में आपसे कहा था कि चार्ज्ड ड्रग्स दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड, द आयोनाइज्ड ड्रग्स, तो this would get trapped here. This would not be absorbed in the intestine. Instead, it would be better absorbed in the stomach, because in the stomach the pH is low, and the acidic drug that I just give, it will be more uncharged, it will be more unionized. ठीक है? तो Dr. Kursalan, do you get the idea now, or should I give some more examples? Okay. मैं आपको थोड़ा सा और आसान करके बताता हूँ इसको। हमने एक एक बात तो हमने डिसाइड कर ली। लेट्स स्टार्ट इट अगेन, ऑल ओवर अगेन। एक बात तो मैं आपको शुरू में ही, आई यूज सम सिंपलर वर्ड्स नाउ। एक बात तो मैंने सिंपल में आपको शुरू में कह दी कि कोई भी ड्रग है, ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब्ड व्हेन दे आर अनआयोनाइज्ड। अनआयोनाइज्ड मतलब दे आर नॉट आयोनाइज्ड। ठीक है? एंड just opposite to that, drugs are poorly absorbed when they are ionized. Dr. Kurtalan, are we clear until now? Just these two terms. इन दो बातों की समझ आ गया? अच्छा, let's continue. ये remember these two things. Now let's move on to further. अब next thing I said कि in which form they are stored. Dr. Kurtalan, actually the ionizability of the drug is actually determined by the environment. ठीक है? तो the form in which they are stored, that is, I think, something related to pharmaceutical. A pharmacist can better tell you about that. We are concerned with the form of the drug when it is inside the body, in different compartments of the body. Okay? मैं अभी आपसे मैं भी कंफर्म करता हूँ इसको, मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा सा और। पहले लेट्स कंटिन्यू दीज टर्म्स, मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरी बात मैंने आपसे ये की कि एसिडिक ड्रग्स, okay, just give me a minute. एसिडिक ड्रग्स हैं, एक सेकेंड। दो बातें हमने अभी तक हमने की एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है? एसिड्स आर मोर एब्जॉर्ब्ड इन, और एब्जॉर्ब, बल्कि एब्जॉर्ब को भी मैं चेंज कर दूं, दे क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मोर रेडिली। ठीक है? दे क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मोर रेडिली। मैं इसकी भी बेसिक्स समझाता हूँ आपको, बल्कि छोड़ें, इसकी भी बेसिक्स में जाता हूँ। आप मुझे बताएं कि व्हाट आर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मेड अप ऑफ? द सेल मेम्ब्रेन्स, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? They're made of two main things. The lipid bilayer. ठीक है? One is the lipid bilayer, and secondly, cell membranes के अंदर क्या होता है? They've got proteins. Hence, they've got proteins. तो ये जो proteins है ना, actually these proteins have charge. ठीक है? तो whenever a
चार्ज से मतलब, तो जब भी कोई substance, if any substance come closer to the membrane which has a charge, ठीक है, इसके ऊपर एक चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, तो दे आर अनएबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, बिकॉज ये चार्ज इसके ऊपर भी है और यहाँ पर भी चार्ज है, तो it's difficult for charged substances, charged or ionized substances to pass through the membrane. इसी वजह से those substances which are neutral, which are uncharged, they can pass easily. ठीक है, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि drugs, they cross the membranes better in the uncharged form or in the unionized form. तो डॉक्टर कुरतन यहां तक समझ आ गई है आपको? डू गेट इट टिल नाउ? ठीक है, अब थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन पे बात करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने आई प्लेस्ड द स्टमक like this is the stomach. It's actually a very ugly stomach. तो we're gonna zoom this portion, the mucosa, gonna zoom this in. इसको मैं zoom in करता हूँ, तो choose the color. तो आपको पता है कि the mucosa is lined by cells, ठीक है, and cells have got cell membranes. So if I zoom in this portion, you will get this. You will actually get this. ठीक है, यहां तक हम आर वी क्लियर अंटिल नाउ? यहां तक होगी बात? यहां तक तो क्लियर है ना सब? ठीक है, ठीक है, ये यहां तक हमने बात करी। अब मैं आपके सामने दो नए कॉन्सेप्ट रखने लगा हूं, ठीक है, दो नए कॉन्सेप्ट रखने लगा हूं। आई नो दिस अ लिटिल ट्रिकी बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अब लेट्स अज्यूम कि मैं एक एसिडिक ड्रग लेता हूं, एसिडिक ड्रग। अब जो एसिडिक ड्रग होगी ना, वो क्या करेगी? इट हैज अ टेंडेंसी टू गिव इट हाइड्रोजन, ठीक है। दिस इज बेसिक केमिस्ट्री, ये जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और अगर मैं एक बेसिक ड्रग की बात करूं, बेसिक ड्रग, तो what a basic drug will do, basic drug will take up the hydrogen, ऐसे, ठीक है। तो हमने एक एक यूनिवर्सल बात है कि एसिडिक ड्रग्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ बेसिक एनवायरनमेंट, जब एक एसिड को आप बेसिक एनवायरनमेंट में प्लेस करेंगे ना, इट विल डोनेट इट्स हाइड्रोजन, ठीक है, एंड इट विल बिकम आयोनाइज्ड। ये देखिए, इस पे चार्ज आ गया, बिकॉज एज आई सेड acid likes to donate its proton, and when it donates its proton it gets a charge. And if I talk about the basic drugs, if you place a basic drug in an acidic environment, it will take up the hydrogen in the acidic environment and it will become, again, it will become charged, ठीक है, it will become ionized, ठीक है। तो are we clear until here, Dr. Kurtland? Any problem until now? यहां तक कोई मसला? ठीक है, हमने शुरू में बात की अब्जॉर्प्शन के बारे में, बात कर ली हमने, चार्ज अनचार्ज के बारे में बात कर ली, हमने ये बात कर ली एसिडिक ड्रग्स, दे बिकम मोर आयोनाइज्ड इन बेसिक एनवायरनमेंट and basic drugs become more ionized in acidic environment. इसी तरह से acidic drugs, they become less ionized in an acidic environment. अब देखिए, मैं एक टर्म लिखने लगा हूं, acidic drugs
become more unionized in acidic environment. Am I correct? ठीक बात लिखी ना मैंने. Acidic drugs become more unionized in an acidic environment. ठीक बात लिखी ना मैंने. तो what if I say that acidic drugs are more readily absorbed in acidic environment? Yes, Dr. Kurtland, this is what I'm trying to explain to you. So they are better absorbed in an acidic environment. And same goes for the bases. Since bases are more unionized in a basic environment, and the unionizability is what is allowing the absorption. This is the reason that the basic drugs are better absorbed in a basic environment, and acidic drugs are better absorbed in acidic environment. So if you place an acidic drug in a basic environment, it will become more ionized, and hence it won't be able to cross the biological membranes. It won't be able to be absorbed. It would not be absorbed. And if I place a basic drug in an acidic environment, it will become more ionized, and again it would not be absorbed. So this is what I was trying to explain to you. So do you have the final grip now? Do you understand the topic, the basis? So we can move ahead. ठीक है. Now I'm gonna test you now. Now let's just assume again we're gonna go back to our nephron. मैं nephron पे वापस हम चले ही कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर से हम चलते चलते कहाँ तक आ गए, स्टमक तक आ गए. तो मैं आपको बता रहा था कि I'm gonna draw a nephron now. ठीक है. So I say that this, again I'm gonna draw compartments. Again, this is blood. This is your renal tubule. And finally, this is your renal tubular cell. अब मैंने आपसे ये कहा था, but I should ask you, what change do carbonic anhydrase inhibitors do to the pH of the urine? What do they do to it? The pH of the urine. Carbonic anhydrase inhibitors. We just studied about it right now. They make the urine more. They make the urine more alkaline. Yes, they make the urine more alkaline. So this property of carbonic anhydrase inhibitor, this is called alkalinization of urine. Alkalinization of urine. And we can actually use this property in the treatment of aspirin overdose. ठीक है? Aspirin overdose. Now, aspirin is an acid in its nature. It is a weak acid. और जब aspirin आएगा renal tubule के अंदर, and I give carbonic anhydrase to this person, this will make the urine more alkaline. So this aspirin will now get ionized because, as I said, acids become more ionized in an alkaline in a basic environment.
So what do you think? Will this aspirin now be able to cross the membranes and get back into blood? क्या ये आ जाएगी वापस? Would it be absorbed? No. Yes, so this aspirin actually gets trapped. This gets trapped. Okay, and hence it more of aspirin would be excreted out. Okay, so this is the phenomena of iron trapping. Okay, so iron trapping is actually can be defined as a phenomena where you trap a substance in a biological membrane in a compartment by changing the pH of that environment. तो अगर मैं आपसे कहूँ what if you want to absorb more aspirin, then what change would you make to the pH of the urine? तब आप urine को कैसे बदलेंगे? Would you like it to be more alkaline or acidic? Yes. And what if the drug that you've given is a base and you want more of that base to be excreted out? तब आप urine को क्या change करना चाहेंगे? How would you like to the urine to be? Would you like it to be more acidic or alkaline? Yes, you would like it to be more. मैं सोच रहा हूँ, अगर आप basic, what if you give overdose of a basic drug and you want to excrete it out of the urine into the urine, तो आप यूरिन की एसिडिटी को यूरिन की पीएच को क्या करेंगे? कम कर देंगे, बढ़ा देंगे? एसिडिक कर देंगे कि अल्कलाइन कर देंगे? अगर आप बेसिक ड्रग को एक्सक्रीट करवाना चाहते हैं, yes, acidic कर देंगे, because again that basic drug, for example, if this was the basic drug and you make the pH of the urine alkaline, this basic drug will now get a charge and it won't be able to cross and get reabsorbed, and hence more of it would be lost in the urine. So this is all the, yes, because we don't want it to be absorbed. Yes, Dr. Kurzlan, now you've got the idea. So this is all about, this is how carbonic anhydrase inhibitors are used in the treatment of aspirin overdose. ऐसे काम करते हैं वो. But one important side effect इसका ये है. Since these are causing alkalinization of urine, alkalinization actually favors stone formation, crystal precipitation. So one adverse effect of carbonic anhydrase inhibitors is that it can lead to stone formation. ठीक है? Are we clear on the subject? 100%. Let me know. I will repeat it 1,000 times again. मुझे बताएं. चले, ठीक है. Good हो गया. Now we can go back to first aid. तो अब आप फर्स्ट एड को बड़े आराम से रीड कर सकते हैं. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? Carbonic anhydrase inhibitors, let me change the color, cause self-limited sodium bicarbonate diuresis and decrease total bicarb stores. ठीक है? Because all of the bicarbonate that was being absorbed in the PCT is now being lost into the urine, making the urine more alkaline and making the body more acidic. ठीक है? तो urine more alkaline. Clinical use, the glaucoma, we discussed about this. Metabolic alkalosis, we discussed about this. Altitude sickness causing respiratory alkalosis, we discussed about this. Idiopathic intracranial hypertension, we discussed about this. You can also add aspirin, a poisoning. You can add this as well. ठीक है? So adverse effects, it causes proximal renal tubular acidosis. Proximal renal tubular acidosis. We will study about renal tubular acidosis in the next lecture. But basically, okay, body के अंदर it is causing acidosis. And proximal renal tubule, because it acts on the proximal renal tubule, it is actually blocking the function of the proximal tubule.
and that is leading to acidosis in the body. Hence, this is called type 2 RTA. We'll discuss about this in the next lecture. Baki, it causes ammonia toxicity as well. It causes sulfur allergy. It causes hypokalemia. But इसमें से the important thing here is, yes, आपने ये सारे याद नहीं रखने. The ones that are loved by the examiners are, it promotes calcium phosphate stone formation, and it causes proximal renal tubular acidosis. Okay, that this was all about carbonic anhydrase inhibitor. Loop diuretics. Loop diuretics, they inhibit the sodium potassium 2 chloride pump or transporter. Okay, and I told you in great detail that this transporter, यहाँ पे ये काम कर रहे हैं ना, it is absorbing all of these ions, these sodium potassium chloride, sodium potassium chloride, all of this into the medulla, and this is what is actually maintaining the hypertonicity of the medulla, and that is what is promoting water absorption. That is what is helping in concentrating the urine, this hypertonicity, medullary hypertonicity. So if I inhibit this sodium potassium 2 chloride, I will abolish the hypertonicity of medulla, preventing concentration of urine. Okay, and it is associated with increased PGE prostaglandin levels. तो इसका vasodilatory effect है afferent arteriole पर. ठीक है, तो को बहुत ज़्यादा टेस्टेड चीज़ नहीं है. It's just side information. I have never seen any question in any question bank जिस पे उन्होंने ये खास तौर पे पूछा हुआ आपसे. ठीक है, but they cause calcium loss. They cause hypocalcemia. Hypocalcemia. Which disease do you think is quite similar to in presentation with loop diuretics? That is actually Barter's syndrome. We discussed Barter's syndrome in our last lecture. ठीक है, Barter syndrome. And इसमें और क्या होगा इसके अंदर, एडवर्स इफेक्ट में हम क्या डिस्कस करते हैं. क्लिनिकल यूज क्या है लूप डायरेटिक्स का. तो रिमेंबर, इन edematous states, all states in which there is edema, हार्ट फेलियर में, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पल्मोनरी एडिमा, सब में हम लूप डायरेटिक्स देते हैं. पाकिस्तान के अंदर फ्रूसामाइड ही चलती हर जगह. आई हैव नेवर सीन ब्यूमेथाइड एंड टॉर्सेमाइड एनीवेयर इन पाकिस्तान. ये अमेरिकन सेटअप्स में यूज होती होगी या इन द यूनाइटेड किंगडम. यहाँ पे हम फ्रूसामाइड पे गुजारा करते हैं. तो हाइपरटेंशन में एंड हाइपरकैल्सीमिया के ट्रीटमेंट में यू कैन यूज बिकॉज इट कॉजेज हाइपोकैल्सीमिया. Adverse effect, the adverse effect which the examiners love about loop diuretics is ototoxicity. First, ototoxicity. Second, metabolic alkalosis. Okay, and I explained कि loop diuretics how do they cause metabolic alkalosis. Actually ये पता क्या करते हैं, because the ascending limb will fail to absorb potassium. This potassium will go on, travel into DCT and end up into collecting duct. And in the collecting duct, this potassium is exchanged for hydrogen. So the body loses hydrogen, and that is what causes alkalosis. ठीक है, तो ये important adverse effect है. Ototoxicity, metabolic alkalosis. बाकी adverse effect, they are not that important. Dehydration, you can count dehydration in as well. बाकी मैंने इतने कोई खास क्वेश्चन बैंक्स के अंदर मैंने कोई खास नहीं देखे. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट लूप डायरेटिक्स. एंड one important thing about loop diuretics is that you can actually have a synergistic effect if you combine loop diuretics with thiazide diuretics. Okay, so we can use them in combination to increase the overall effect. Then there is ethacrenic acid. Ethacrenic acid it is also a loop diuretic ही है ये, but the important thing about ethacrenic is that it does not cause ototoxicity. बल्कि हाँ, it is similar to furosemide, but ज़्यादा ototoxicity. ये उल्टा मैं बोल गया, ये उल्टा ज़्यादा ototoxic है. ठीक है,
but the good thing about ethacrinic acid is that it does not cause sulfur toxicity. ये मैं उल्टा बोल गया, सल्फर टॉक्सिसिटी नहीं करती बट ऑटोटॉक्सिक ज्यादा है, ठीक है। एंड रिमेंबर this ototoxicity, this hearing loss, this is permanent, ठीक है। एंड एक मजे की बात बताता हूँ आपको, अगर आप में से कुछ लोगों ने ईएनटी पढ़ी हो, वी एक्चुअली इंजेक्ट we can actually inject these drugs because these are ototoxic. We inject these right into the ear in a treatment of a disease जो मेरे अभी जहन में नहीं आ रही, in order to abolish all of the function, ear function. तो वो एक डिजीज है, आई लेट यू नो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, बड़ी इंटरेस्टिंग वो डिजीज है, मैं आपको ना एंड पे मैं आपको वो गूगल से सर्च करके दिखाऊंगा, भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, विच एक्चुअली प्रूव्स कि ये वाकई ऑटोटॉक्सिक है एंड दे कॉज परमानेंट डैमेज टू द ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप, थायजाइड डायरेटिक्स। Yes, Dr. Kurtland, it is Meniere's disease. In Meniere's disease, there is continuous ringing and fullness of the ear, and it's problematic for the patient. So we just straight in inject loops into his ears. Actually, ये first treatment नहीं होता, it is actually the last resort. We और ट्रीटमेंट, बाकी ट्रीटमेंट्स करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, स्मोकिंग सीसेशन वगैरह करते हैं, लेकिन ये एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। तो आई एम सरप्राइज दैट यू नो अबाउट दिस। अच्छा जी, थायजाइड डायरेटिक्स। Thiazide diuretics produce effects similar to loop diuretics. They will cause hypokalemia, hypomagnesemia, diuresis, metabolic alkalosis. The only distinct difference is that they cause hypercalcemia, ठीक है, hypercalcemia cause करते हैं thiazide diuretics, ठीक है। and इनकी एडवर्स इफेक्ट दैट द एग्जामिनर्स लव टू आस्क, ओ हाँ, एक एडवर्स मैं भूल ही गया, सॉरी। तो लूप एंड थायजाइड, बोथ ऑफ दीज दे कॉज गाउट, दे कॉज hyperuricemia. And how do they cause hyperuricemia? The mechanism basically ये होता है कि, I mean, let me draw renal tubule. फर्ज करें कि ये है renal tubule, ठीक है। एंड renal tubule के अंदर you have got molecules for urea, uric acid, and you've also got molecules of the loop and thiazide drugs. And the transporter for both of these substances is common. So these two substances will actually compete for the transporter. And उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि one of them will win, ठीक है। और दिस इज एक्चुअली, ये मैं एक मिनट में उल्टा कर गया, एक मिनट में, just causing confusion between the colors. This will actually be the artery, and यहाँ पर होगी the parallel to it will be the renal tubule. और जो ट्रांसपोर्टर मैंने ड्रॉ किया है, let me change the color, this transporter, this is actually responsible for secreting substances from the blood into the renal tubule. So these two substances will compete for the transporter. तो क्या होगा, the drugs will win, leaving behind uric acid behind in the blood, and that is what causes hyperuricemia, ठीक है। So the mechanism of development of hyperuricemia is the same in both in thiazide diuretics and loop diuretics. Or thiazide diuretics, they cause hypercalcemia, ठीक है। तो यस, और हाइपरलिपिडीमिया, एग्जामिनर्स को ये बहुत पसंद है, एग्जामिनर्स को हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरयूरिसीमिया, द थ्री हाइपर्स, ये बहुत पसंद है। तो व्हेनेवर यू सी अ पेशेंट हु हैज लाइक डायबिटीज, तो avoid giving thiazide, go for ACE and ARBs.
And if you see a patient with hyperlipidemia, then also again avoid thiazide. And if you see a patient with hyperuricemia, gout, then again avoid thiazide and loops. Okay, you don't want to give these drugs because they will disturb the the lipid profile and glycemia. ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें मैंने आपको बताई, ये इनके बारे में बहुत पूछते हैं, मैंने बहुत पसंद है एग्जामिनर्स को. You will see the questions about these quite often. नेक्स्ट है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स. अभी तक जितनी आपने पीछे डायरेटिक्स पढ़ी थी, the mannitol, the carbonic anhydrase inhibitors, the loop, the thiazide, all of these were causing potassium loss and they were causing hypokalemia. These potassium sparing diuretics, they actually cause hyperkalemia and they actually save potassium. ठीक है, तो ये कौन सी हैं? These are aldosterone receptor blockers, spironolactone. These are sodium channel blockers as well, जैसे कि triamterene amiloride. They block sodium channel at the, तो आपको पता है ना एपेक्स के ऊपर इन द एपिकल सरफेस देयर आर सोडियम चैनल्स व्हिच अलाउ सोडियम एब्जॉर्प्शन, तो इसको ब्लॉक कर देते हैं. और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन आपको पता है, एल्डोस्टेरोन एब्जॉर्ब्स सोडियम एंड इट एक्सक्रीट्स पोटेशियम. So if we inhibit this function, and then things will be reversed. There will be hyponatremia and hyperkalemia. And क्या लगता है आपको, अल्कलोसिस होगा बॉडी में मेटाबॉलिक, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा? क्या होगा? What do you think? एसिडोसिस होगा, yes, because aldosterone it causes अल्कलोसिस, और उसको बंद कर दें तो एसिडोसिस हो जाएगा. ठीक है, तो क्लिनिकल यूज हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में दें, पोटेशियम डिप्लीशन के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकलीमिया, हार्ट फेलियर में they have got great role because these are one of the drugs which actually reduce mortality in the patients of heart failure and they increase the survival rate. Other drugs are some beta blockers, some ACE and ARBs, and neprilysin inhibitors, and isosorbide dinitrate plus hydralazine. ये सारी drugs they increase the survival rate. अच्छा जी, ascites के अंदर आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर माइलोराइड इज यूज. ठीक है, रिमेंबर इन ये आपने फर्क याद रखना है. फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में बेसिकली मसला क्या है, एंडोक्राइन कोरिलेट्स. सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में पहला क्या होता है, सेंट्रल के अंदर आपका ये पिट्यूटरी ही नहीं बना रहा, एडीएच. ठीक है, कोई मसला हो गया तो आप उसको सिंथेटिक एडीएच दे देते हैं, मसला हल हो गया. यस, डेस्मोप्रेसिन. और नेफ्रोजेनिक में बेसिकली द ADH level would actually be higher than normal. Actually there's problem with the tissue. The tissue is not responding. So this is called nephrogenic diabetes insipidus. And one important drug that causes nephrogenic diabetes insipidus used for the treatment of bipolar disorder is lithium. Lithium. ठीक है, तो अब देखें मजे की बात यह है कि lithium is actually used for the treatment of SIADH as well, which is severe inappropriate ADH release. तो क्योंकि वो खुद डायबिटीज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कराती है, तो देखो दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के. एक को ट्रीट कर, डायबिटीज इंसिपिडस में आपका ADH काम नहीं कर रहा या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और ऐसा ही ADH के अंदर बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है. तो एक ड्रग ऐसी लिथियम जो कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस करवाती है, सेंट्रल सॉरी नेफ्रोजेनिक करवाती है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं SIADH की ट्रीटमेंट के लिए. तो ये एक उसका है. तो और इसमें इसकी आप ज़्यादा डिटेल उसके अंदर पढ़ेंगे एंडोक्राइन के अंदर. उसमें फिर वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट भी होता है, एक यूरिन ऑस्मोलैलिटी टेस्ट होता है. ठीक है, तो दैट इज समथिंग वी विल स्टडी इन एंडोक्राइन. तो ये मैं बता रहा था आपको. और हाँ, अभी हमने थायराइड डायरेटिक्स के बारे में बात की. थायराइड डायरेटिक्स आर एक्चुअली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस.
जो कि बड़ी हैरत की बात है। थायजाइड, यू सी इन डायबिटीज इंसिपिटर्स क्या पैथोलॉजी होती है? व्हाट डज द पेशेंट कंप्लेन? यू टेल मी। क्या कहता है पेशेंट आपके पास आके, क्या कहेगा? हाउ वुड a patient of diabetes insipidus present to you at the clinic? Yes, polyuria. Exactly. So why are we giving thiazide to a person, which is actually a diuretic, which will cause even more diuresis? We should cause even more diuresis because it is a diuretic. तो आप इस बंदे को thiazide क्यों दे रहे हैं? Like, are we nuts? Like, have it we got any brains? हम उसको thiazide क्यों? Why are we giving thiazide to this person? लिखा हुआ भी है फर्स्ट एड के अंदर, आपको दिखाता हूँ। मैं मिस कर दिया। ये देखिए। ये here, nephrogenic diabetes insipidus, thiazide use, clinical use। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है इसका। इट्स अ थ्योरी दैट आई हैव रेड। वो ये है, कहते हैं कि थायजाइड एक्चुअली they initially they cause diuresis, and this diuresis actually stimulates the proximal part of the nephron to absorb more, uh, to increase reabsorption. So that is how they help. Ultimately, they help decrease polyuria. They decrease urine formation. That is how they act. Initially, they cause diuresis, but this actually activates the proximal nephron segments, the PCT, and there is increased reabsorption in the proximal segments of the nephron, which actually reduces the urine production. So this is the mechanism. It's a little complicated. तो इसको कहते हैं paradox effect, paradoxical effect, an effect that is opposite that you were expecting. तो है diuretic, but here it's actually acting like an anti-diuretic. तो ये this is something interesting uh, about thiazide diuretics। ठीक है। तो दी ये जो है ना, ये जो टेबल दिया हुआ है एंड पर, और हाँ इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। बहुत द एग्जामिनर्स लव टू आस्क दिस, they just love to ask about hyperkalemia in a patient who is being given spironolactone। एक उनको ये बहुत पसंद है हाइपरक्लेमिया, इस पे भी हम बात करते हैं। और दूसरा इनको गायनेकोमास्टिया एंड एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट बहुत पसंद है। I came across a question when I was practicing MCQs. A patient with the presenting complaint of erectile dysfunction came to the clinic, and upon history, drug history, it was revealed that he is taking spironolactone. So yes, spironolactone can also cause erectile dysfunction। लिख लें ये जरूरी है। ठीक है। ऑर्गेनिक होम्योपैथी भी करवाता है बिकॉज क्योंकि spironolactone is actually, it is a steroid hormone, spironolactone। ठीक है, आप इसको ब्लॉक कर रहे हैं तो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं इस वजह से। एंड ऑफ कोर्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस। So if you come across a patient of toxicity of spironolactone toxicity, तो remember the labs। आपको labs पे क्या मिलेगा? Now you tell me। We will start with sodium। Yes, Dr. Kurslan, this is the reason it is used for the treatment of hirsutism, because hirsutism के अंदर there is imbalance between the androgen and progesterone, so you can use it in the treatment of polycystic ovarian syndrome। I didn't know about this, Dr. Kurtan, but thank you for your input। This is why spironolactone is used in the treatment of um, polycystic ovarian syndrome, जिसके अंदर there is androgen and progesterone imbalance, estrogen imbalance। उससे क्या होता है कि एंड्रोजन इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं उनमें, दे गेट हिर्सुटिज्म एंड हेवीनेस ऑफ वॉइस। तो उसको खत्म करने के लिए आपने स्पाइरोलेक्टोन दे दी, तो विच हैज एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। अच्छा, इस पे हम बात करने लगे थे अभी। हाँ, मैं आपको लैब्स बताने लगा था। इफ ए पेशेंट कम्स टू यू विद दिस, तो उसमें स्टार्टेड विद ऑफ विद सोडियम। तो सोडियम शुड बी
क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? डिक्रीज्ड। पोटेशियम इंक्रीज्ड। पीएच ऑफ द बॉडी डिक्रीज्ड, एसिडिक हो जाएगी। पीएच ऑफ द यूरिन इंक्रीज्ड। ठीक है। तो ये इस तरह की आपको लैब मिल सकती है इन पेशेंट्स के अंदर। ठीक है। और हाइपरक्लीमिया इनके अंदर हो सकता है। ठीक है। Hyperkalemia की presentation, I've told it dozens of time. You will get tall, tinted T waves and treatment. Treatment में you give furosemide, you give insulin with glucose, you give SABA, short-acting beta agonist, and first of all, you give calcium gluconate to balance the cardiac membranes. इसमें CVS में मैंने बड़ी डिटेल में लेक्चर में बात की हुई है. You can go watch that lecture. Anyways, तो ये अब नीचे been given, ये जो हमने सारी बातें अभी तक की है ना, ये उसकी समरी है. All of the things we've thought about, this is all the summary. So I won't be going through all of this. We have already talked about all of this. हमने अभी ये पीछे समराइज, ये अब समराइज हुआ है जो हमने अभी जितनी सब कुछ डिटेल में बात की है. There's nothing new in here.